I was listening to Rahul Dravid's presser, and in that presser, he explicitly mentioned that, how cautiously they have made this squad, keeping T20 World Cup in their mind as well. He mentioned that, we have rested a few players because we knew that they'll be playing in the 5-match test series against England. And then he said that we have kept a few players in the team because we wanted to give each and every player good game time because, he was asked questions around Shreyas Iyer, KL Rahul, Tilak Varma, and others. So he said that no, we have made this T20 squad, especially keeping in mind that what we really need in the T20 World Cup, because ODI World Cup's result didn't go our way. Now, in those terms, it seems that they have cautiously taken that decision of taking in Rohit Sharma and Virat Kohli in the team. So where was Virat Kohli's you know this step that he won't be there in the first T20? Where was his decision? Where was his participation? Well, because everybody knows that Ajit Agarkar went there, and then they had discussions around the team combination and all. Chetan, in that case विराट कोहली ने तो बताया होगा ना कि मैं पहले T20 मैच के लिए नहीं अवेलेबल हूँगा, बट बीसीसीआई ने तो कुछ सामने नहीं रखा है, एंड नाउ यू आर नॉट इवन सर्टेन अबाउट कि विराट कोहली सेकंड और थर्ड मैच में होंगे या नहीं होंगे. I love that reaction before the answer. ये आप अज्यूम कर रहे हो कि विराट कोहली ने उनको बताया होगा, ये आप अज्यूम कर रहे हो कि बीसीसीआई को मालूम होगा. मुझे कॉपीराइट लगाना पड़ेगा क्योंकि जेबी ने पहले ये बोल दिया. This is the stupid phase of Indian cricket, यार. You're not supposed to ask intelligent questions. Ask stupid questions. विराट कोहली greatest of all time, 50 T20 100 लगेंगे या नहीं लगेंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे नहीं बनेंगे, रोहित को फेयरवेल मिलेगी नहीं मिलेगी. You are supposed to ask these questions. These are the only questions that matter. वर्ल्ड कप छोड़ो यार. तुमने ये राहुल द्रविड़ is saying कि ये वर्ल्ड कप के हिसाब से बनाया है. Somebody should have asked कि ये सेम टीम तो है, 8 प्लेयर सेम ही तो हैं जो 22 में खेले थे, सेमीफाइनल में मार खा के आए. क्या चेंज किया आपने? So yeah, this is a stupid phase of Indian cricket. He did mention, I believe Kanav will be the one who can tell us in detail because he was there in the presser. Kanav, if I'm not wrong. No, I just want to add this कि you know what, एक चीज इससे ये भी पता चलती है कि see, joining late is not an issue. That's fine. The problem is the lack of communication. हम लोग भी अपना time waste कर रहे हैं because they are taking us for granted. We are not supposed to know this information that Virat Kohli is missing the first T20. And if he's missing the first T20, then Jamie की बात सही है. Where is that line कि he will join the squad for the second and the third T20? They assume कि okay, that is also not important. Let us say कि that is also not important to tell us. Fine, okay. यहाँ पे सवाल ये बनता है कि did the BCCI know it before team selection? Did Virat Kohli inform them after team selection, before team selection? क्योंकि इसकी implication है यहाँ पे. Let's be very honest about it. If the BCCI was not informed about it prior to the team selection, if he's pulled out after the team selection, then you are taking things for granted. Let's be very honest about it. ठीक है, आपने अपना नाम फॉरवर्ड कर दिया साउथ अफ्रीका में कि मैं को T20 सीरीज खेलना है, सेलेक्टर ने भी मान लिया, बीसीसीआई ने भी मान लिया, all very good. But then if this is happening after the team selection, which seems to be the case, क्योंकि otherwise where is that line? He will join for the second and third T20, right Sahil, right Jamie? Yeah. We always see those lines, right? Players have missed. अब साउथ अफ्रीका टूर ही उठा लो ना, एवरी मैच का उन्होंने बताया था ये प्लेयर अब ज्वाइन करेगा, ये प्लेयर अब ज्वाइन करेगा. विराट कोहली have flown back home, London, wherever. उनके बारे में भी सारी information. They didn't mention Chetan Virat Kohli London episode. It was not. No, but they did mention. There was another mail later that it was mentioned that I'm not saying he did go to London. ये mention नहीं किया था. ये mention किया गया था कि he will join ahead of the first test or whatever. Right. So जो भी चीजें no. They didn't say anything about Virat. विराट का उन्होंने पूरा एपिसोड वाज अ पास तो था ना. So okay, बाकी सबका था. Maybe I'm confused about it, but others का तो था ना. 3 अलग-अलग स्क्वाड थे, हर स्क्वाड के बारे में इंफॉर्मेशन थी, right? Which is the norm. So the question here is कि has this happened after the team selection and somebody failed to inform? If that is the case, then you're taking things for granted. I doubt. Okay? Yeah. And if it happened before the BCCI or before the team selection, then there is obviously an oversight. Yeah. But who knows the truth? Kisko malum hai. So, but imagine a superstar of Indian cricket taking things for granted. That would be very disappointing.
बिकॉज No, आप इतने टाइम बाद खेल रहे हो, आप इतने टाइम बाद वापस आ रहे हो, एंड देन did you not inform that you will not be available for the first T20? And where does that up? You could have picked an extra player for that first T20. You know what I'm trying to say? Yeah. Yeah. So, No, I'll quickly add a couple of lines to add some context to the way Virat Kohli operates. So I was trying to make sense of why he disappeared midway during the South Africa tour. So I made a few calls. One fine day, I get a call from a really senior BCCI official. I was just checking with him why Virat didn't play the intra-squad game. So I got a Okay. response that Virat was never going to play that game. He was never available for that game. His personal visit to London was planned well in advance, and he had informed BCCI well in advance. And I got a line that this is the way Virat operates. His schedule is decided well in advance. So I kind of have a feeling right now that he would have informed them, but they don't care about anyone. इनको फर्क नहीं पड़ता, because I'm just drawing from what I was told by that BCCI like I office. said, there are two possibilities. Yeah, no, So I agree where you're in coming both from. scenarios, Yeah. questions arise. Is Correct. the superstar taking things for granted, or Yeah. is the BCCI taking things too casually? Both are not good. Both are BCCI not good. doesn't This care is the about us, reality. right? Yeah. What is the reality? We don't know. We'll never know. सेकंड इसके अंदर जो सबसे बड़ा, अब बोल रहे हो ईशान किशन wasn't available for selection. He still hasn't made himself available yet. That is what Rahul Dravid said at the Yeah. pre-match presser. अब ये लाइन डालने Yeah. में कितना प्रॉब्लम था? आपने डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन लेके पूरा रायता फैला दिया 2 दिन के अंदर उसका. आप एक लाइन डालते थे, अजीत अगरकर को कैमरा के आगे बिठाते थे जूम कॉल के ऊपर, 4 पत्रकार सवाल Yeah. पूछते, 4 जवाब मिल जाते, इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता है. नाउ दैट पुअर किड इज फेसिंग द wrath ऑफ मीडिया. इतना स्टोरी चल रहा है उसके अगेंस्ट. आई एम नॉट सेइंग द स्टोरीज आर रॉन्ग, because I know something has happened. I'm not saying they are wrong. Something has happened in South Africa. I'll put it on record. Something has happened, but I won't go into details of that. Let's leave it there. But something has happened with regards to Ishan. Shreyas वाला indiscipline is crap. That's all crap. वो राहुल ने आज कंफर्म भी कर दिया. श्रेयस का 15 में जगह ही नहीं है, और श्रेयस T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं जाने वाला. जो रेस्टेड टर्म है, बहुत बहुत कन्वीनियंटली हम लोग फेंक देते हैं. वो बहुत कन्वीनियंटली. यहाँ पर एक चीज है साहिल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने प्रेसर में कहा कि श्रेयस अय्यर हैज मिस्ड आउट. He said कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने T20s नहीं खेले, and he said that that's why we went ahead with the other players who have played T20s. अब बहुत सारे यंगस्टर्स ने T20I खेला पूरे साल, तो उन्होंने इंक्लूड किया. श्रेयस अय्यर को उन्होंने बाहर किया क्योंकि उन्होंने नहीं खेला है. सो आई वाज जस्ट रीडिंग ऑल आवर व्यूअर्स क्वेश्चंस. बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि फिर रोहित और विराट के में तो ये आपने कंसीडर नहीं किया. उनका तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है. आप चाहे खेलिए चाहे आप ना खेलिए, आप आते जाएंगे. उस सिलेक्शन की फर्स्ट कैजुअलिटी शुभमन गिल लग गया ना आज बोल दिया ना राहुल ने, शुभमन का जगह नहीं है. Yes. अभी धीरे धीरे देखो कितनी कैजुअलिटीज आपको निकलती हुई दिखेंगी इस ड्रामे के बाद. अभी रिंकू सिंह भी आपको बहुत कम दिखेगा 11 के अंदर. कम क्या, वो तो खेलेगा ही नहीं T20 वर्ल्ड कप के 11 के अंदर, अगर सूर्य और हार्दिक दोनों को आप 11 के अंदर खिला रहे हो. शुभमन का पहली थैंक यू हो चुका है. विराट को अगर इन्होंने ओपन करा दिया तो मे बी ये शुभमन को 3 पे खिला दें, बट नाउ दे हैव अ लाइकिंग फॉर यशस्वी बिकॉज ही इज गोइंग टू बी योर ओनली लेफ्ट हैंडर इन द 11. आपके पास 11 में है ही नहीं बैटर जो लेफ्टी होगा सिवाय यशस्वी के, क्योंकि रिंकू का जगह वापस आ गया. अगर जडेजा वापस आ गया तो है ना लेफ्ट हैंडर 11 में. हाँ, वो नीचे रहा. उसका तो बैटिंग अगर आ गया तो हम वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज भी नहीं जीतने वाले. And that's also a possibility. Well, Soumya is completely right. That's a possibility. Soumya, did you hear Dravid saying that, we have a lot of left-handers, and we'll discuss this when we'll select our final squad for the T20 World Cup, which means that he's... You know, what's funny about this? We're talking about left-handers in this squad, and the comedy of this is कि वर्ल्ड कप में ये लोग दिखेंगे भी नहीं शायद. 11 में तो एटलीस्ट नहीं दिखेंगे. You have Tilak, you have Rinku, you have Shivam Dube, you have तीनों नहीं है. Tilak को 15 में भी नहीं होगा. You have a 15 भी मुश्किल है. Exactly, Washington Sundar who is a left hander. इस स्क्वाड में लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, लेकिन जो फाइनल 11 खेलेगी वर्ल्ड कप के अंदर, उसमें यू विल बी आस्किंग फॉर कोई कि भाई बीच में कोई उल्टे हाथ वाला है तो कर लो बैटिंग आके. तो ये बहुत इजीली डॉज किया जाता है. कमिंग टू राहुल द्रविड़, ये बहुत इजीली डॉज किया जाता है चीज़ों को. एंड साहिल, जेबी, चेतन भाई, एवरीवन इज प्रीटी राइट कि यार अगर जिस तरीके से विराट फंक्शन करते हैं वो आपको पहले से पता होगा कि वो अवेलेबल नहीं है पहले. मतलब एग्जैक्टली ये एक लाइन डालने में क्या फर्क पड़ जाता है. एट टाइम्स आई फील कि एक मजा आता है क्या बीसीसीआई को ये सब करने में, सो दैट वी गेट सम कंटेंट टू डिस्कस.
आप फॉर्डर दे रहे हो यार, नीडलेस फॉर्डर दे रहे हो। विराट कोहली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी विराट कोहली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट व्हेन इट कम्स टू यंग प्लेयर्स, जूनियर प्लेयर्स जो youngsters, अभी yeah. who are trying to establish themselves in the 11, you don't do such things with them, boss. Just make it clear that so and so was not available, so and so is carrying a nickel. अभी तक सूर्या का हमें किसी ने कोई अपडेट नहीं दिया है, एक लाइन क्यों नहीं डाला सूर्या वाज नॉट अवेलेबल, क्योंकि उसका रिकवरी टाइम इतना है। अब उसके अंदर 10 लोग एनसीए में फोन करेंगे, 11 वर्जन मिलेंगे, 17 स्टोरीज आएंगी, 18 फेसबुक लाइव होंगे, मतलब this is Sahil, I want to know from you. I want to know from you, how many calls did you answer that day when this Surya Kumar Yadav's news broke? Because different news channels and different stories that he's going for ankle surgery, he's going for sports hernia, he's going for this. No, he is going for that, but him missing the IPL is very far fetched. अभी बहुत दूर है यार, अभी इतना सोचने का जरूरत नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एक छोटा सा मेडिकल अपडेट डाल दो ना। एक मेडिकल अपडेट आया था, मुझे याद है, जसप्रीत बुमराह का, हार्दिक पांड्या का, श्रेयस अय्यर का और ऋषभ पंत का, पूरा बीसीसीआई का एक मेडिकल बुलेटिन आया था। व्हाई कांट इट बी अ रूटीन? व्हाई डू वी गेट अ बीसीसीआई न्यूज़लेटर एवरी मंथ जिसके अंदर हमें बताया जाता है क्या हो रहा है? एक मेडिकल बुलेटिन ही चालू कर दो यार कि क्या चालू है प्लेयर्स के साथ। और सब बोर्ड्स करते हैं, एवरी बोर्ड मेक्स इट वेरी क्लियर अबाउट देयर प्लेयर स्टेटस, रिकवरी प्रोटोकॉल्स, यू नो एनसीए में कितना टाइम है। यहाँ पे तो हम लोग ही लगे हुए हैं ड्रामा मचाने में। आई जस्ट टॉक अबाउट कैजुअलिटीज पता है एक बंदा कौन होगा जो प्रॉब्ली इसमें इस लॉट के अंदर बहुत टैलेंटेड है, वो होगा तिलक वर्मा। विराट नहीं, उन्हें उसे 3 नंबर खिला दोगे, फिर उसे नीचे डाल दोगे, फिर उसे 11 से बाहर कर दोगे। नहीं, अगर तिलक की बात हो रही तो तिलक से पहले तो ईशान बनता था 3 पे यार। ईशान ने कुछ ऐसा गलत नहीं करा लास्ट 3-4 T20 के अंदर, करने के लिए मौका कहाँ मिला गलत सही करने। अब तो ईशान आपको स्क्वाड में भी नहीं दिखेगा आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड, वो स्क्वाड में भी नहीं होगा।